Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, I will discuss Unit 15 University Days. University Days is a personal narrative or a narrative essay, just like the previous यूनिट अ लॉन्ग वॉक होम। यहाँ पर भी राइटर उसी तरह अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई यूज़ किया है। आई पास्ड ऑल द अदर कोर्सेज दैट आई टुक एट माई यूनिवर्सिटी बट आई could never pass botany. This was because all botany students had to spend several hours a week in a laboratory looking through a microscope at plant cells, and I could never see through a microscope. I never once saw a cell through a microscope. This used to enrage means make angry, gussa dilana. My instructor, he would wonder mean walk, go here and there, to move without any specific or any definite purpose, बगैर किसी ख़ास मकसद की इधर उधर वॉक करना. Around the laboratory, pleased means happy with the progress all the students were making in drawing the involved. Involved means the given. And so I am told interesting structure of flower cell. Until he came to me, I would be just standing there. I can't see anything, I would say. He would begin patiently enough explaining how anybody can see through a microscope, but he would always end up in a fury means anger, gussa, claiming that I could too see through a microscope but just pretended mean bahana karna. I couldn't. It takes away the beauty of flowers. Anyway, I used to tell him we are not concerned means interested, relate, or we don't deal with beauty in this course. He would say we are concerned solely means only with what I may call the mechanics mean structure of flowers. Well, I would say I can't see anything, try it just once again, he would say, and I would put my eye to the microscope and see nothing at all except now and again a nebulous means vague, unclear, milky substance. A phenomenon mean action, process. Maladjustment means disarrangement, betartibi. You are supposed to see vivid means clear, restless means moving, clockwork means regular, baqaida. Of sharply defined plant cells, I see what looks like a lot of milk. I would tell him this, he claimed, was the result of my not having adjusted the microscope properly. So he would readjust it for me, or rather for himself, and I would look again and see milk. अपने एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी की बता रहा है राइटर के बाकी तमाम कोर्सेज़ तो मैंने कर लिए थे पास, लेकिन मैं बॉटनी नहीं पास कर सका. रीज़न ये थी कि बॉटनी पास करने के लिए हर स्टूडेंट के लिए कंपलसरी रिक्वायरमेंट ये थी कि लेबॉर्ट्री में कुछ घंटे स्पेंड करके प्लांट सेल्स की स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखने के बाद ड्रा करने थे. बाकी सारे स्टूडेंट्स तो ड्रा करते थे, प्रोफेसर भी खुश होता था, लेकिन मेरे से ये काम पॉसिबल नहीं था और इस वजह से उसको बड़ा गुस्सा आता था. मैं कहता था कि मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, तो वो कहता था कि आपने इसको प्रॉपरली अरेंज नहीं किया माइक्रोस्कोप को. वो मेरे लिए कर लेता, लेकिन मैं फिर वही कहता था कि मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा. तो राइटर कहते कि कभी मैं उसको कहता था कि अगर हम इस तरह ज़्यादा करीब से देखेंगे तो इसकी ब्यूटी ख़त्म हो जाएगी. प्रोफेसर जवाब में कहता कि ब्यूटी नहीं, हमने सिर्फ इसकी स्ट्रक्चर के साथ ताल्लुक़ है इस सेमेस्टर में, इस कोर्स में. तो वो कहते जब मैं देखता था तो बस मुझे कुछ अनक्लियर सब्सटेंस नज़र आते थे जो कि मूविंग फॉर्म में थी, मूवमेंट कर रहे थे, लेकिन कह रहे थे कि वो जो रिक्वायरमेंट थी वो मुझसे फुलफ़िल नहीं हुई. फिर क्या हुआ? आई फाइनली टुक अ डेफर्ड मीन पोस्टपोन, पास एज दे कॉल्ड इट, and waited a year and tried again. You had to pass one of the biological sciences as you couldn't graduate. The professor had come back from the vacation, brown as berry, bright-eyed and eager, mean enthusiastic, to explain cell structure again to his class. Says, well, he said to me cheerily means happily, when we met in the first laboratory hour that semester, we are going to see
cells, aren't we? Yes, sir, I said. Students to the right of me and left of me and in front of me were seeing cell. What is more, they were drawing picture of them in their notebook. Of course, I didn't see anything. कहता है कि फिर जब पॉसिबल ना हुआ मेरे से तो मैंने सेमेस्टर फ्रीज़ किया, एक सेमेस्टर ब्रेक लेके मैं चला गया, वापस आया छुट्टियों के बाद तो सेम कंडीशन थी, बाकी स्टूडेंट ड्रा कर रही थे, मैं वैसे ही खड़ा था और प्रोफेसर ने मुझसे पूछना था बार बार कि आप ड्रा क्यों नहीं कर रहे, रीज़न क्या है। तो अब आगे वो एक्सप्लेन कर रही है। वेल ट्राई एट द प्रोफेसर सेड टू मी ग्रिमली मीन्स स्ट्रिक्टली, सख्ती के साथ, विद एवरी एडजस्टमेंट ऑफ द माइक्रोस्कोप नोन टू मैन एज गॉड एज माई विटनेस आई विल अरेंज द ग्लास सो दैट यू सी cells through it or I will give up teaching in 20 years. Apparently he cut off abruptly mean quickly. For he was beginning to quiver mean tremble, kampna, shiver. Like Lionel Barrymore. Lionel Barrymore is an American actor. And he genuinely means really. Wish to hold on to his temper mean to continue his temper. His saying with me had taken a great deal out of him means given a real tough time to him. अब अगेन जब प्रोफेसर ने मुख्तलिफ एंगल्स मुख्तलिफ एडजस्टमेंट के साथ राइटर के लिए माइक्रोस्कोप अरेंज किया, लेकिन उसके बावजूद राइटर कहता था कि मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा, तो उसको बहुत गुस्सा आया और उसको बहुत टफ़ टाइम मिल रहा था। मतलब जब राइटर कह रहा मैं बार बार कहता कि मुझे नहीं कुछ नज़र आ रहा, तो इससे उसको गुस्सा भी और एक रियली टफ़ टाइम मिल रहा था उसको। सो वी tried it with every adjustment of the microscope known to man. With one of them did I see anything but blackness or the familiar lactale means resembling milk, anything that resembles milk. Opacity means a substance or a milky substance, and that time I saw to my pleasure and amusement means enjoyment or happiness. Variegated mean of different types. Constellation mean a group. Flicks, specks, dot, दाग, धब्बे, निशानात. These I hastily mean quickly draw. The instructor noting my activity came from an adjoining mean near. Desk, a smile on his lips, eyebrow high in hope. He looked at my cell drawing. What's that? He demanded with a hint of squeal means shout in his voice. That is what I saw. You didn't, he screamed, losing control of his temper. Temper means anger or temperament. Instantly mean quickly, and he bent mean jukna over and squinted into microscope. Squinted mean to cross look, to have a cross look. His head snapped up means burst. That's your eye, he shouted. You have fixed the lens so that it reflects. You have drawn your own eye. हर किस्म के एंगल एडजस्ट करने के बाद राइटर कहता है कि मुझे सिर्फ एक एंगल के साथ कुछ नज़र आया। तो कहते वो मुझे कुछ ऐसा नज़र आया कि कोई मिल्की सब्सटेंस है और वहाँ पर कुछ दाग धब्बे निशानात हैं, मतलब स्मॉल स्पॉट्स हैं। तो कहते हैं मैंने जल्दी से ड्रा किया। जब मैंने ड्रा किया तो प्रोफेसर करीब से देख के आया कि अच्छा शायद अब इसने कुछ ड्रा किया, होपफुल था। जब उसने देखा तो वो गुस्सा हुआ और कहा कि ये क्या है, तो मैंने कहा जो मैंने नहीं, आपने ये गलत ड्रा किया है। तो बहुत गुस्से में उसने कहा कि आपने जो माइक्रोस्कोप है उसको गलत तरीके से एडजस्ट किया था और उसकी रिफ्लेक्शन की वजह से आपने अपने आई की पिक्चर ड्रा की है। उसने उसको उल्टा लगाया हुआ था, तो उसको जो नज़र आया वो उसकी अपनी आई नज़र आई और वही उसने ड्रा की थी। तो इस पर प्रोफेसर को काफ़ी गुस्सा आया और यहाँ पर फिर ये नैरेटिव ऐसे ख़त्म हो जाता है। मज़ीद आगे फिर उसने इसमें डिटेल ऐड नहीं की। जिस तरह लास्ट वाले नैरेटिव ऐसे में तो उसने आगे बताया था ना कि उसको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन मिला, लेकिन चूँकि ये ह्यूमरस है
लाइट टोन में है तो इसलिए यहाँ पर फिर इसने मज़ीद इसको कंक्लूड नहीं किया। वो लाइट टोन में नहीं था, वो उसने कंक्लूड किया। तो मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं नरेटिव ऐसे, कुछ इस तरह हो सकते हैं जो इनकम्प्लीट, कुछ कंप्लीट, और डिपेंड करता है उसकी लेंथ और इसी तरह कंटेंट पर, सब्जेक्ट मैटर पर कि लाइट टोन है या सीरियस।